Good morning students. Today we are going to do the application of dimensional equation. The question given is the centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass, velocity and radius of the circle. Derive the formula for centripetal force using the method of dimensions. यानी मेथड ऑफ डायमेंशंस को यूज करके हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ. सो यू आर गिवन द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन which quantity, mass, velocity and radius. So we can write down F centripetal force proportional to m power a, that is a is power of m or you may say dimension, then velocity v power b and depends upon radius of circle power c. So we can write that is F proportional to m power a, v power b and r power c. Okay, that implies F is equal to k is m power a, v power b, r power c. What is k? Where k is a dimensionless constant of proportionality. Okay, and a, b and c are the powers of m, v and r respectively. Okay, now so give it equation number 1. Now writing the dimensions of various quantities in equation 1. So F is your force, its dimension is here F is equal to ma. So your dimension is m l t minus 2. तो we can write, हम इसे लिख सकते हैं ना, F का डायमेंशन लिखना है तो क्या है F का डायमेंशन m1 l1 t minus 2. ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है के को हम क्या कंसिडर किए हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी इसका कुछ डायमेंशन नहीं है. दैट मीन्स उसको छोड़ दो. उसके बाद m, डायमेंशन ऑफ m इज m पावर a, देन v इज वेलोसिटी इज l t माइनस 1 l और यू में राइट 1. इसके पावर कितना है b. देन रेडियस क्या है, एक लेंथ है पावर c. यहाँ से हम लिख सकते हैं m पावर a, l पावर b, देन t पावर माइनस b, l पावर c. ठीक है, इज इक्वल टू m पावर a, l पावर इधर क्या है, l पावर b है, इधर l पावर c है, तो हम लिख सकते हैं l पावर b प्लस c. ठीक है, t पावर माइनस b. नाउ अब अप्लाई करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. नाउ अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, देन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में देखो m पावर
1 है, m पावर a है, सो a इज इक्वल टू 1. ओके, एंड देखो इधर l पावर 1 है, इधर l पावर b प्लस c है, b प्लस c इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इधर LHS में क्या है, t पावर -2, इधर t पावर -b, सो -b इज इक्वल टू -2. यहाँ से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2. नाउ इन दिस इक्वेशन b is 2, so 2 plus c is equal to 1. That implies c is how much? C is equal to 1 minus 2, that is -1. Okay, so we get the value of a is equal to 1 and b हमको कितना मिला 2, तो c -1. Okay, now substitute this value. Now substituting the values of a, b and c in equation 1. इसको इक्वेशन 2 कर दो, यानी सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या था, f इज इक्वल टू k m पावर a v पावर b r पावर c, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k m पावर a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 2 एंड c का वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू k m v स्क्वायर, या -1 तो r. ओके, दैट इम्प्लाइज f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r. Okay, this is the required relation. This is the required relation. Okay, and if the value of k is given, then you put that value and write down the formula. Okay, thank you, have a nice day.